ऑन है दोस्तों, मैं हूं फखर आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स की हमारी बराह रास्त ट्रांसमिशन 2019 मेंस वर्ल्ड कप की रवां दवा है और इस वक्त हेडिंगली लीड से खबर इस तरीके से है कि वेस्ट इंडीज ने अपना आखिरी मैच जीत लिया है अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान का भी आखिरी मैच था और बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ। बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली बहुत सारे लोगों को। आई एम श्योर कि सारे के सारे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे एक एक बॉल को, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। ये वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का हर मैच इंपॉर्टेंट मैच होता है। और सूरत हाल इस तरह थी कि वेस्ट इंडीज वन द टॉस। आइए जरा मैच समरी पे नजर डाल देते हैं। वेस्ट इंडीज हैड वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। क्रिस गेल अपनी जिंदगी में आखिरी बार वर्ल्ड कप के मैच में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के मैच में आपको आज नजर आए ग्राउंड में। सिर्फ 7 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदों पे। वेरी अनलाइक क्रिस गेल, बट दैट्स द वे ही वेंट आउट टुडे from the arena of 50 overs World Cup cricket. Lewis 58, Hope 77, Hetmeyer 39, Poran 58, Holder 45. A middle order coming together finally for West Indies, but just a little too late in the game. And they put up a 311 run total for the loss of 6 wickets in 50 overs. Mujibur Rahman there with 10 overs, 52 without any wickets. And Zadran there, Daulat Zadran, the most successful bowler, picking up 2 wickets, but was expensive. 73 runs in 9 overs. And then 1 wicket for Nabi, 1 for Shirad, and 1 for Rashid Khan. And then came the Afghanistan batting. Have to give them credit. Today they put up a fight. They were in it. They knew they wanted to go home with a victory, and they scored 288 runs, chasing that total. They were out last ball, but this is how it went down. Gulbadin there didn't get the start that he needed, but Rahmat Shah and Ali Khail put up a great partnership there. 62-86. Najibullah contributing with 31. Asghar coming in there with 40. But somehow it just couldn't be. There was a bit of an innings by Shirad towards the end of 25, but in the end it was just not manageable for Afghanistan. And amongst the wicket takers, it was good to see Kamal Rooch back, and he picked up 3 wickets, so 37 runs. That's just great bowling there. And Braithwaite picking up 4 wickets today for 63 runs. So overall, a great game of cricket for the West Indies. The West Indies can go home back to the island life with their heads held up high, and they can go ahead and relax and focus on the days ahead. Afghanistan also got a lot of thinking to do, and I hope that their cricket board chief is going to have to eat a lot of humble pie. He already has had to eat a lot of humble pie, but he realized that you have to be responsible with what you say on an international platform. Your statement has to be responsible, and you can never be too arrogant in the game of cricket. We learned it the hard way. Hope you learn it as well as we go along. Introducing my panelists in the studio with me, the Lord of Lords, the double centurion at Lords, the former national team coach and chief selector, Mr. Mohsin Khan. Mohsin bhai, welcome back to the studio. With him, one of the finest wicket keepers the game has seen. He captained Pakistan, coached Afghanistan, and continues to give his services to the game of cricket through his inside information on the game, Mr. Rashid Lateef. Rashid bhai, एक बार फिर खुश आमदीद. With me, let's put it this way, the alpha male of the tribe, the Zulu man himself, leading from the front with the bat and ball and always turning games on their head and winning it for South Africa in his days, Mr. Lance Glusner. Lance, welcome back, man. Yes, thanks. Always good to have you there, man. Always a pleasure. Thank you. Yeah, always. So, it's an exciting game of cricket. I know you watched it ball by ball. You went through the whole game. I know that for sure. You never took a nap. Of course. Yeah, yes, no, definitely not. Right. So, tell us about it. What are your thoughts on it? I'll add to you. Look, another good fight. I think, unfortunately for Afghanistan, chasing 300, they needed one of those batters that got in to get 100. They needed somebody to be able to take it deep. At one stage, there, wonderful partnership of 132 between Shah and Ikram, but just not enough. Just didn't have the firepower at the end either. The West Indies did, but yeah, what a game! I think. I really believe Afghanistan can go home with their heads held high. Yes, they've got a lot of work to do, but they unearthed in Ikram today a wonderful young batter and wicketkeeper as well. Absolutely. So yeah, Mohammad Shahzad is going to have to do some work to get back into the setup, which will be good for Afghanistan. But that's brilliant. And as you said earlier, it's now up to the board to provide that environment for growth. And for stability. Bangladesh
were also in a situation like this when they first came onto the scene as well, and Yeah. we've seen how they've progressed. So, hats off to Afghanistan. They didn't get what they needed, but they can go home having fought hard. Absolutely, they could go home, proud of that, especially this last game that they have played. Let's take a look at the points table and let's see how the points table is shaped up right now. Well, there you have it at the bottom, the West Indies and we cannot see. I cannot see. All right, there we go. There's the West Indies after their 9 games, go home with 5 points. Afghanistan 9 games, 9 losses and no points. And you've still got a game for South Africa has a game, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan all have a game. And then Australia and India, they have already qualified, but they do have a game each as well. So that's how the points table is looking at. Mohsin bhai, happy with the way this game went down? It was a dead rubber, we all know it was a dead rubber, but happy the way it went down? Yeah, the way Lance said all about it, I need not to repeat anything. Very well said, very well explained. The only thing, I will second one thing, that I was really impressed, Fakhar, with this Rahmat and Ikram. Yes. I mean, the way they batted, it was tremendous. The kind of confidence, stroke play all around the wicket was zabardast. और कमाल के बाद आप देखिए क्या हुई है. वेस्ट इंडीज़ ने इस वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता और आखिरी मैच जीता. पहला मैच हमसे जीते ही और लास्ट मैच जीते. बीच का इनका फेज बहुत बुरा गया, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए. अफगानिस्तान इनका तो वेस्ट इंडीज़ की तो जो वैल्यू है क्रिकेट में वो तो इनकी स्टैंडिंग बन गई है, वो बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान विल गो विद अ हेड हाई. दे शुड गो विद अ हेड हाई. दे हैव पुट अप अ फाइट इन ऑलमोस्ट एवरी गेम, और बहुत से तो ऐसे मैचेस हुए कि फकत दे ऑलमोस्ट टुक इट फ्रॉम द अदर टीम, एंड बट दे eventually they lost it. So they need a finishing touch. I was speaking to Lance while we were coming. If they would have had 2 good middle order batsmen, and one or 2 good fast bowler, things could have been totally different in this World Cup. I think they'll prepare for that. And like I said, कि अगर इन्होंने अपनी 4 दिन की क्रिकेट तगड़ी कर ली, तो आप देखिएगा कि ये, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप का है फखर, आई थिंक अफगानिस्तान, मैं नहीं कहूँगा they should be very proud of that, but they should be proud enough कि उन्होंने I think अपने नेशन को लेट डाउन नहीं किया. उनके लोग बहुत खुश तो नहीं होंगे, लेकिन ये भी नहीं होंगे, डिप्रेस भी नहीं होंगे कि they were very disappointing. I think they worked hard in every match. They fought well. Whether they are bowling or batting, तो अफगानिस्तान well done. Absolutely, well done Afghanistan. Absolutely. राशिद भाई जी सर, अफगानिस्तान की टीम बड़ा अच्छा मैच खेला आज. उन्होंने मतलब आज वो चाहते थे जीतना, डेल के बड़ा 100% रिजल्ट देके जा रहे हैं. 100% रिजल्ट देके जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. उनके कोच, जो उनके अफगानिस्तान बोर्ड के चीफ हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर हमें उनकी मदद की जरूरत हो तो वो हेल्प करेंगे, हमें सिखाएंगे. तो पॉइंट्स टेबल पे तो हारी कुछ और तरीके से. खैर वो एक बंदी का अपना स्टेटमेंट था, वो नुमाइंदगी नहीं करते पूरे अफगानिस्तान की. बेशक. खैर मैच के ऊपर आते हैं. आज दोनों ने अपना गेम चेंज किया है. दोनों टीम ने जो शुरू में खेलना चाहिए था चेंज किया है, नॉर्मल क्रिकेट पे आ गए. पहली विकेट जल्दी गिरी है दोनों की. वेस्ट इंडीज़ की 21 रन पे गिरी है, लेकिन पार्टनरशिप लगी है बहुत अरसे के बाद. 109 पे दूसरी, तीसरी 174, तो बेस बन गई, फाउंडेशन बन गई. और 24.5 ओवर में तीसरी विकेट गिरी है 174 पे. अफगानिस्तान का देखते हैं, पहली विकेट 3 पे गिरी, सेकंड विकेट 138 और थर्ड 189, और ओवर कितने हुए थे 26.2. तो यहाँ पे क्या ये खेलने का तरीका है जो कि आखिरी मैच में नजर आया आपको. अगर ये शुरू से प्लानिंग अगर करते हैं, शुरू से खेला होता है. वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं. शुरू में उन्होंने पाकिस्तान को आउट किया बाउंसर्स पे, उससे अगले मैच में बाउंसर पे रहे, तो उनको मालूम चल गया नहीं यार वो विकेट ऐसी थी जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा ऊपर जा रही थी, तो फिर आ गया है. तो इनको इतना पता नहीं चला. बैटिंग में भी शुरू में मारधाड़ की बहुत, और पूरी टीम 212 पे इंग्लैंड के खिलाफ ढेर हो गई. तो अपने खेलने का तरीका दोनों टीम को चेंज करना पड़ेगा. नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, दूसरी टीम को देख के ही सीखा होगा इन्होंने. जिस तरह से आपने बात की, इकराम की बात की और रहमत की, मतलब ये स्टाइल है खेलने का. आराम से खड़े हुए, उसके बाद गेम को चेंज किया, और जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको बिल्कुल ठीक लेके जा रहे थे. ये तो इनकी विकेट्स गिर गई तकरीबन एंड में जाके, जब वो तीसरी 189 पे गिरी, चौथी 194, पांचवी 201 पे, छठी 227, सातवीं 244, आठवीं 255, नवीं 260. ये जगह है इनको. नबी आउट हो गया, असगर अफगान 40 रन के अच्छा आउट हो गया, फिर राशिद खान आउट हो गया, समीजुल्लाह शनवारी.
तो यहाँ भी इनके लिए अपने गुंजाइश है, अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, खेलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी होते हैं ना उसमें बेहतरी लेके आनी पड़ेगी कि किस तरह के प्लेयर्स इनको रिक्वायर्ड है टीम में, जो होंगे प्लेयर अंडर 19 में जिस तरह आ रहे हैं प्लेयर, तो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी. Yaqinan, very true, very true. One of the special things about today's game was that we all saw Chris Gayle for the last time in World Cup cricket, at least in the 50 overs format. And what a monumental powerhouse he has been for the game, a great ambassador of cricket. 19 years, he was seen on the international scene in the year 2000, and here you are in 2019. So what a magical, history and legacy he has left behind. There's entertainment, there is guts and glory and passion and a lot of color, the Caribbean color. Yeah, a lot of color. And it's been really, really nice. But ये बदकिस्मती से राशिद भाई, ये वर्ल्ड कप उनके मतलब का नहीं था. कोई भी वर्ल्ड कप इनके मतलब का नहीं रहा. हाँ, ये कुछ उनके डिसमिसल्स हैं, देखेंगे, देखना पसंद करेंगे. जरा दिखाइए, दिस इज हाउ क्रिस गेल हैज फेल्ड इन दिस वर्ल्ड कप. इनका आउट होने का तरीका तकरीबन एक ही होता है और इस वर्ल्ड कप में 150 किया है, जो लंबा स्कोर किया है उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शायद किया, 87 किया है उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में. तो उसके अलावा इनके डिसमिसल देखते थे ये मिचेल स्टार्क ने आउट किया था, 2-3 दफ़ा पैच पे लगी थी, आउट दे चुके थे. अगर ये थोड़ा सा और नॉर्मल क्रिकेट खेलते, ये बहुत डेंजरस प्लेयर थे. मिडिल ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं ये. तो लेकिन ये पावर प्ले के लिए मेरा ख्याल है इनको एक रोल दिया गया. पावर प्ले में ये तो 6-7 ओवर तो ऐसे मजे से खेल रहे थे, बाद में मारना शुरू करते हैं. अगेंस्ट बांग्लादेश, गुड डिलीवरी देयर. देखिए उनको आगे की बॉल पे ये बहुत आउट हुए. आगे की बॉल, yes. Yeah, sorry Lance, you wanted to say something? No, sorry. I just wanted to add, I think just as a general rule, what he's done is try to overhit the ball for most of the World Cup. I think he's been trying to get the biggest six, and you end up losing your shape and slicing, and he's hit a lot of catches. So I think, that just for me has been something that hasn't really worked out for him. He's just tried to overhit a lot of balls. I think also his style, but maybe age is also catching up. Maybe he's not getting that kind of that position. Is definitely one of the. You're not as sharp and as fast as you used to be, and that split second of a short ball or whatever it is can just rush you. इसमें एक चीज़ और देखनी होगी, ICC इवेंट में हमेशा एक इवेंट के अलावा 2006 में हुआ था जो इंडिया में वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उसमें 3 सेंचुरी थी. उसके अलावा ये आज का डिसमिसल इनका वो भी आगे वाली बॉल पे. आगे वाली बॉल. Again there you go. We're far away from the body, just swinging widely. इसमें इन्होंने खेले 16 इवेंट खेले में. 2002 की चैंपियन ट्रॉफी में हाई स्कोर इनका 49 था. चैंपियन ट्रॉफी 2004 में 99 था. एक इनिंग, सिर्फ एक इनिंग, हर जगह एक इनिंग. चैंपियन ट्रॉफी 2006 में 3 इनिंग इनकी 3 सेंचुरीज थी. ये काबिले गौर चीज़ है. चैंपियन ये वर्ल्ड कप 2007 एक 79 था 8 इनिंग या 9 इनिंग में. वर्ल्ड T20 2009 एक 88 था. वर्ल्ड T20 2010 एक 98 था. बाकी सब नीचे 25 हाई स्कोर था. वर्ल्ड कप 2011 80 हाई स्कोर था. वर्ल्ड T20 2002 75 हाई स्कोर था. उसके अलावा सारे नीचे एक इनिंग है हर जगह. चैंपियन ट्रॉफी 2013 में कोई भी बड़ा स्कोर नहीं. वर्ल्ड T20 2014 कोई बड़ा स्कोर नहीं, 48 हाई स्कोर था. 2015 में एक 215 थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. वर्ल्ड T20 2016 एक सेंचुरी थी, उसके अलावा कुछ नहीं. एक बैटिंग नहीं की, एक में 4, एक में 5, एक में 4. ICC क्वालिफायर राउंड में 123 एक मैच में बनाए, बाकी 14, 1, 17, 0 एंड 10. 11 वर्ल्ड कप में 250 है, एक 87, एक 50, बाकी आपने सारा देख लिया है. लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में 22-23 सेंचुरीज इनकी सिर्फ T20 में है. टेस्ट मैच में 2 ट्रिपल सेंचुरीज इनकी हैं, जो टेस्ट क्रिकेट गलत छोड़ गए थे. शायद हार्ट का इनका इशू था जिसकी वजह से ये छोड़ गए थे. लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर देखा जाए, जिस तरह का नाम है ना, वन मैन शो, वो नजर नहीं आया. That performance is missing. I mean, he has not been able to hold up to his reputation in one-day cricket the way he should have. I mean, the kind of person that he was, basically. Yeah, absolutely. One-day cricket, there's
Well, not like there's anywhere to hide in any kind of game, but T20 is certainly a place where he's, he's cemented his reputation. Test cricket, let's not forget Test cricket. He's been a fine Test cricketer as well. Yep. But yeah, absolutely. He'll be disappointed in the way that he finished up in this World Cup. Of course it is. That's the game, There's no guarantees, and doesn't matter how hard you train or how hard you try. Sometimes it just doesn't work out for you. Absolutely. And unfortunately, but that's not how we're going to remember him. No, we're not. You described him We are beautifully going earlier. to remember him Absolutely. for 10,393 runs in 298 matches. Well, that's how we're going to remember him. That's how we. I think that's how his life will be remembered. ये शहबाज लोधी साहब ने निकाल के दिए अपने पीटीवी के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वरना काम मिलता है यहाँ पे। Right, that's true. एक बहुत कम लोगों को ये वो रेपुटेशन मिली है जो टर्म बन गई थी, the Gale factor. Yeah, the Gale factor. It is not an easy thing to get that reputation, Yes. to create that. Yeah. The Gale factor इतना बड़ा important बन गया, तो that means he has done a lot for cricket Yes. and for himself. So great striker. और अभी जैसे लांस ने कहा, अभी जो हम देख रहे हैं फखर जोर से हिट मारने के चक्कर में बैलेंस लूज कर रहा है, हेड मूव हो रहा है, but he was trying to stay according to his reputation. But I think a great compliment to him that he got that reputation of creating for himself a Gale factor. Absolutely. I mean, nobody was talking about his team, whether he's playing for franchise or for West Indies, but they were saying Gale factor. Yeah. So good luck to him in the future of his life. Absolutely. I think he's going to still keep on adding color to cricket through some way or the other. We're going to miss those dances and those shapes and moves Absolutely. that he brought to the game as well, which is amazing. Yeah, I mean, that is true. And with that, दोस्तों, we are going to now take you into a break. But break पे जाने से पहले आप लोगों के लिए हम लोग सवाल आपको देते हैं. इजी डील्स की मोबाइल ऐप के ऊपर सवाल आ रहे हैं. इजी डील्स मोबाइल एप्लीकेशन पाकिस्तान नंबर 1 क्विज ट्रिविया एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म. और इस वक्त ये रियल टाइम प्रॉपर्टी की तरफ से सवाल है. रियल टाइम प्रॉपर्टी की तरफ से सवाल इजी डील्स की ऐप पे आ रहा है. अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए. खेलने के लिए, जीतने के लिए तैयार हो जाइए. Who contested the first ever day and night test in 2015? ये ऑप्शन ए पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान. रियल टाइम प्रॉपर्टी की तरफ से आपसे सवाल है कि पहला डे एंड नाइट का टेस्ट मैच किन दो ममालिक के बीच में खेला गया था. रियल टाइम प्रॉपर्टी की तरफ से आपको मिलेगा एक अच्छा सा क्रिकेट का बैग. और याद रहे कि कल हम लोग पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश के मैच पे इजी डील्स की मोबाइल ऐप पे इजी पैसा के ताउन से 2.5 लाख रुपए के सवाल खेलेंगे कैश के लिए. उसके लिए लाजिम है कि आपके पास इजी पैसा की एप्लीकेशन डाउनलोड हो और आपका इजी पैसा का अकाउंट, आपका वॉलेट तैयार हो और वो उसी नंबर से मुंसलिक हो जिस नंबर पे आप इजी डील्स की आपकी ऐप है, ताकि हम जब आप यहाँ पे विनर्स हमारे पास जब डेटा निकलता है तो वहीं पे उसी वक्त उनको वो मैसेज जनरेट करें और आपके अकाउंट में आपके पैसे फौरी तौर पे दस्तयाब हो जाएं. पिछली जो हमने न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में खेला था इजी पैसा के साथ, उसमें से आप में से ज्यादातर लोगों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं पैसे. जिनके नहीं पहुंचे वो लोग हैं जिन्होंने या तो अपना अकाउंट अभी तक बनाया नहीं उस नंबर के साथ जिस पे इजी डील्स उनकी मुंसलिक है. तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी इजी पैसा की ऐप जो है वो डाउनलोड करने उसी नंबर के साथ जिस पे इजी डील्स है तो आपके पैसे भी हम आपको पहुंचा दें. और इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं ब्रेक के बाद.